So as I told you, we have to solve some of these network analysis problems. In last class, I have shown you how to do the forward and backward pass computation. Can you hear me? Right. So I have shared a slide, and that is some example. So the first example, if you remember, this is the same problem that I asked you to draw the network. So now we will solve it. So you can read the statement. The table shows the activities required to complete a project with the duration and immediate predecessors. Okay, so these are the activities and these are the predecessors. So using that, you have constructed the network like this. So this is the solution for the network, right? There is no dummy activity. So the duration of each activity is mentioned. Now, next, what you can do? The first thing is that you can start the forward computation and followed by the backward computation. So by doing that, you have to fill up all the two figures or digits that you are mentioning near these nodes. ठीक है, जो आप दो block बना रहे हो और उसको आप completely fill कर दो. Thereafter, you can identify the critical path, right? Then the another thing which you can get out of this calculation is called floats. Float, F-L-O-T, float. So float is a kind of freedom or a kind of degree of freedom that the project manager is having with respect to each and every project activity, right? So if there is some float, that means that activity, if it is getting delayed, it is not going to affect the overall project completion. Unlike the critical activities, which are directly affecting it. If the critical activities are getting delayed, then the project completion will get delayed. Right. So for this problem, let us solve it using the forward and backward pass computation. I think the next slide. Yes. So look at this figure very carefully. The statement is also there. Use activity network for the project in example 1 to find the earliest event times and latest event times. So the figure, the numbers that we are mentioning near each node using these two blocks, right, rectangles, that is nothing but the earliest and the latest, right, event times. So you are asked to find those things in this problem. Give the minimum duration of the project and the critical activities. Okay, so this is also asked to find what are the critical activities and what is the minimum duration in which this project can be completed. Okay, so now come to this figure and let me explain it. So that those who have missed out in the previous class can understand. So after drawing the network, हम क्या कर रहे हैं कि हर एक नोड के पास ऐसे दो blocks बना रहे हैं, ठीक है, that we have to do. And I told you we have to begin with the first block, right? That is by default you have to mark it as 0, the first block of node 1. Then in the forward pass you have to move to the consecutive nodes. But the only thing is that if a node is having more than one arrow, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक कंपैरिजन करना पड़ेगा. कंपैरिजन में क्या लेना होगा, मैक्सिमम या मिनिमम? ओके, मैक्सिमम लेना पड़ेगा जहाँ पे you have more than one arrow. ठीक है, so let me explain it for you, and I hope you listening to me carefully. Although there are only 21 students in the class, I can't help it. So for node 2, there is only one activity, that is activity A. So that will be 0 plus 3. So the first digit will be 0. Sorry, 3. That is the earliest finish time of this activity. A. It is marked in red color because maybe it is part of the critical path, which we will find it later on. But when you are doing the forward calculation, you may not understand whether it is critical or not. So 3.
Now the most important thing is here the node 4, right? The node 4. In the node 4, there are 3 arrows are meeting. So there will be a kind of comparison, and you have to take the maximum of the 3. So what are the 3 alternatives? One is 3 plus 5, that is 8, coming from activity D. The other alternative is 0 plus 6, that is 6, coming from activity C. Then the other alternative is 4 plus 1, that is 5, if I am connecting through E. So out of these 3, the maximum is 5 plus 3, that is 8. तो आपका जो फर्स्ट डिजिट है इस ब्लॉक में नोड 4 में उसको आप 8 कर दिए, earliest finish time that is possible. Okay. Similarly, you can have a comparison at the last node, that is node 5. There you have to compare between 8 plus 7, वो एक ऑप्शन है, और अदर ऑप्शन क्या है? Anyone? Right. So 4 plus 6 is the other option. So that is 10. So maximum we have to take. So 15. Okay. Now the next step is that in the last event, that is the last node. Nodes are events. In the last event, you have to make the second figure, that is the latest finish time, equal to the earliest finish time. So that you have to make 15. Right? Then you have to move back, right? That is the backward pass computation. So when you are moving back, if there is a single arrow, then also there is no problem. Just subtract it. For example, for node 4, it is simply 15 minus 7. So the second digit also become 8. But when it is coming to the node 3, right? Node 3, there are 2 options again. You have to compare, right? And you have to take the minimum in the backward passing. So minimum. So what are those 2 things which you are comparing? One is 8 minus 1, right? When you are coming from activity E. So 8 minus 1 is 7. The other option is 15 minus 6, that is 9, when you are coming from activity F. So the minimum comes out to be 7. So आप देख सकते हो कि node 3 में आपका तो latest finish time 7 हो गया, that is the minimum. Similarly, at node 2 there is only one option, no problem. But at node 1, that is the start node, again you have 3 options to compare. One is 3 minus 3, the other is 6 minus 3, and the other one is 7 minus 4. So the minimum is 0, right? Again, I also told you that you have to get the first node's event times to be 0, 0. And the second figure will automatically come as 0 if you have done these things correctly, right? So you can easily fill these early start and early finish times for each of these events, right, comfortably. Now, what next? What next? Now, the next thing is that to identify the critical path or the critical activities. So remember, there can be more than one critical path, right? So for this case, how many total paths are possible between the start node and the end node? Can you check? Total how many paths are possible? Just check and tell me. How many paths are possible? No. I'm asking between node, first node and last node, कितने ऐसे path, connecting path possible है? It is more than one. Just check. जैसे एक path हो गया आपका 4 is the right answer. 4, yeah, 4 is the right answer. तो alternative path क्या है? एक तो हो गया आपका ADG, ठीक है? दूसरा हो गया CG, और एक हो गया BEG, ठीक है? और लास्ट हो गया BF, राइट? सो दीज आर द 4 अल्टरनेटिव पाथ्स. इसको छोड़कर और कोई पाथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते. These are the 4 possible paths which are connecting between first and the start and the end nodes. अब इसमें
जब आप 4 अल्टरनेटिव पाथ आपको मिल गया, देन यू कैन सी कि ये जो 4 पाथ्स है इसका टोटल ड्यूरेशन क्या है मींस फॉर ईच ऑफ द पाथ्स। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पाथ है जो रेड बनाया गया है, इसका टोटल ड्यूरेशन क्या है, आप इंडिविजुअल एक्टिविटी के ड्यूरेशन को ऐड कीजिए। सो 3 + 5 दैट इज 8, 8 + 7 दैट इज 15। ठीक है, तो उस पाथ का टाइम हो गया 15। ओके, यू कीप इट फॉर note it and keep it aside. So it is 15. Second path का कितना टाइम हो गया, 6 + 7, right, that is 13, that is C and G. Next path का क्या है, 4 + 1 5, 5 + 7 12, ठीक है, B E G, उसको भी अलग रखिए 12। और लास्ट पाथ का कितना है, B F, that is 4 + 6, that is 10। तो जैसे मैंने आपको बताया, what is critical path? Critical path is that path which is taking the longest time। ठीक है, दैट इज द टेकिंग द लॉन्गेस्ट टाइम। और आप ये भी देखोगे कि जितने अल्टरनेटिव पाथ है इसमें एटलीस्ट ऐसे एक पाथ जरूर मिलेगा जिसका टोटल ड्यूरेशन आपका ये 15 में होगा, मतलब जो लास्ट नोड का जो टाइम है ना वो होगा, डेफिनेटली होगा। कोई एक का होगा, एक से ज्यादा भी पाथ का हो सकता है। तो अगर ज्यादा पाथ का होगा दैट मीन्स देयर आर मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स। तो इस केस में ऐसा एक ही पाथ है, ऐसा एक ही पाथ है, दैट इज द पाथ ADG, जिसका टोटल ड्यूरेशन 15 आ रहा है और आपके लास्ट नोड का वैल्यू भी 15 है। दैट मीन्स दैट इज द पाथ विच इज कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो उस पाथ में जितने एक्टिविटीज आ गए, क्या क्या आ गए, A, D and G। सो दीज 3 एक्टिविटीज आर कॉल्ड क्रिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटीज क्यों, because if any of these activities out of A, D, G is getting delayed means इनका duration 3 है, 5 है, 7 है, तो मे बी इनके कुछ रीजन से उनका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ गया, A को 3 के जगह 5 टाइम लग गया, हाँ, या D को 5 के जगह 7 लग गया। सो व्हाट विल हैपन, आपका ये लास्ट का जब 15 है वो उतना ही बढ़ जाएगा। दैट मीन्स द प्रोजेक्ट इज गेटिंग डिलेड if these critical activities are getting delayed, but it is not applicable to other activities। आप देख सकते हो जैसे जो other activities है which are non critical activities like your B, C, E, F, ये जो 4 एक्टिविटी है they are non critical activities। इसमें अगर थोड़ा सा डिले होता भी है, थोड़ा सा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप उसको कितना भी डिले करो, अगर अब ज्यादा डिले होगा so that will also become a red line, right, that is also possible, that will also become critical। But up to a certain extent if they are getting delayed then it is not affecting that project completion time, that is 15 days, तो 15 ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका जो एक्टिविटी C है, अभी वो ड्यूरेशन 6 है, तो उसमें आप अगर और 2 दिन डिले कर देते हो, 2 दिन, ठीक है, तो दैट विल बिकम 8। ठीक है, so now that path will become 8 + 7 15, 15, so that will be another critical path, but it is not going to affect the project completion, तो भी वही 15 ही रहेगा। try to understand। similarly जैसे आपका एक्टिविटी F है, तो एक्टिविटी F को अगर आप और 2 दिन बढ़ा देते हो तो 6 हो जाएगी, तो ये जो पाथ है BF, तो ये 10 के जगह 12 हो जाएगा, but it is not going to hamper the project completion time। Is it understood? That's why these are called non-critical activities। So this network diagram actually helps the project manager to exactly identify कि ऐसे कौन सा एक्टिविटी है जिसमें मुझे थोड़ा फ्रीडम है, मुझे थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम है, isn't it? Because जब प्रोजेक्ट कोई एग्जीक्यूट करता है तो जो रिलैक्स करने का जो टाइम मिलता है ना, that is really precious। क्योंकि means you can understand in real life if the things are not completed in time, the what is the consequence। तो ये जो non critical activities है, these are real very I mean attractive things for the project manager, so you will be happy। okay, ये सब जो एक्टिविटी है यहाँ पे मुझे 2-3 दिन का मुझे है फ्रीडम, so that is called float, technically that is called float, right। so ये जो float है, इस फ्लोट को वो कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर पाएगा, इनफैक्ट इस फ्लोट को यूज करता है अपना जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको बढ़िया से यूटिलाइज करने के लिए।
ठीक है. So that is also another skill and it may need some analytical tools to identify कि कैसे रिसोर्स को यूटिलाइज किया जाए कि प्रोजेक्ट डिले ना हो और आपका मिनिमम रिसोर्स में जो है काम चल जाए. मान लीजिए रिसोर्स एक मशीन हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है या एक स्किल्ड मैन पावर हो सकता है, तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए कि क्रिटिकल एक्टिविटी में डिले ना करके नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को थोड़ा डिले करके समथिंग लाइक दैट यू हैव टू मेक सम काइंड ऑफ what is you call it, maybe some kind of arrangements or utilization, proper scheduling of your activities so that your project completion is within time, that 15 days, and you have achieved that with minimum resources. That is the challenge. That is the challenge. अगर आप जब भी रिसोर्स जरूरत पड़ा आप परचेस कर लिए, प्रोक्योर कर लिए, so that is not intelligent decision. The intelligence is there that how you have utilized the minimum resources without affecting the project completion. That is the skill. ठीक है. तो ये project I mean network diagram is a tool which helps in that. ठीक है. Okay. So as far this problem is concerned, you are asked to find the critical activities or the critical path and the project completion time, the minimum duration of the project. So the answer to the first part, that the minimum duration is 15, either it is days, weeks or something in time unit, but it is 15, right? You cannot complete the project at a time which is less than that, not possible. That is the minimum time. Secondly, the critical activities are A, D and G, and the rest of the activities are called non-critical activities, right? Okay, okay, ये problem हो गया. So here are some calculations of this. You can see it here. Now look at this table, right? Look at this table. Here we are getting something called total float, right? Floats are also 3 types, right? So first we'll begin with the total float, and that is the most commonly used type of float. So for activity A to G, you can see the total float is calculated like this: 3 minus 0 minus 3. Now let me tell you what is this calculation means. Okay, listen to me carefully. How to find the float of an activity, right? To find the float of an activity, okay, you just pick up the start node and the end node of that activity. ठीक है, जैसे मैंने suppose I pick up activity A, right? Activity A का मैं total float calculate करना चाहता हूँ. अभी मैं सिर्फ total float की बात कर रहा हूँ. Total float calculate करना चाहता हूँ. So I'll pick up the node 1 and the node 2, the start and the end node. और ये start and end node के जो times हम calculate किए हैं, जो yearly and latest time हम calculate किए हैं, अब उसको आप देखिए. ठीक है. अब ये दोनों ब्लॉक को यूज करके आप इस एक्टिविटी का टोटल फ्लोट कैलकुलेट करेंगे. टोटल फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन the latest finish of that activity, right, and the earliest start of the that activity. Latest finish जो उस एक्टिविटी के जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है उससे आपका earliest स्टार्ट टाइम को माइनस करना है और उससे जो वैल्यू आया उससे आपका एक्टिविटी का ड्यूरेशन को माइनस करना है. देन यू विल गेट द टोटल फ्लोट. आई विल रिपीट इट. कोई भी एक्टिविटी का जब आप टोटल फ्लोट निकालेंगे तो उस एक्टिविटी का जहाँ एंड हो रहा है उस एंड नोड के जो लेटेस्ट फिनिश टाइम, मतलब जो सेकेंड डिजिट है, जो आपको बैकवर्ड पास से जो मिला हो, जो सेकेंड डिजिट है उससे आपका जो उसके स्टार्ट नोड के जो फर्स्ट डिजिट है, yearly स्टार्ट डिजिट है, उसको माइनस करना होगा. और जो रिजल्ट आया उससे उस एक्टिविटी के ड्यूरेशन को माइनस करना होगा, तभी आपको मिलेगा फ्लोट, टोटल फ्लोट. तो इजीली आप ये टेबल देख सकते हो. इसमें क्या क्या है? 3 माइनस 0 माइनस 3, राइट. 3 माइनस 0 क्या हुआ कि इसके लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है 3 दिखाया था नोड 2 में, और yearly स्टार्ट टाइम 0 ही है, वो बाय डिफॉल्ट हमेशा 0 ही रहता है. सो 3 माइनस 0 तो 3 हो गया. देन माइनस ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, दैट इज आल्सो 3. So in this case, the total float of activity A is 0. ठीक है. Similarly, और कोई एक एक्टिविटी ले लीजिए जिसका हम टोटल फ्लोट कैलकुलेट करेंगे.
कोई एक बताइए हमको जहाँ पे आपको थोड़ा लग रहा है। ठीक है, मैं एक रैंडमली लेता हूँ, लेट अस से एक्टिविटी एफ। ठीक है, एक्टिविटी एफ का टोटल फ्लोट कोई बता पाएगा अभी मुझे? एक्टिविटी एफ का टोटल फ्लोट आप समझ पा रहे हो, बता पा रहे हो? नहीं, ओके, अभी तक आप नहीं समझे हो, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। कोई भी एक्टिविटी का, लिसन टू मी केयरफुली, कोई भी एक्टिविटी का जब हम टोटल फ्लोट निकालेंगे, ठीक है, तो उसके मैंने कहा था उसके स्टार्ट नोड और एंड नोड का टाइम जो हम कैलकुलेट किए हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड पास में, वो दोनों ब्लॉक्स को देखेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी एफ का स्टार्ट नोड हो गया 3 और उसके जो दोनों टाइम है वो है 4 और 7, ये देख रहे हैं वैसे। उसके एंड नोड के टाइम हो गया 15 15। ठीक है, अब इसके जो टोटल फ्लोट होगा, मैंने कहा टोटल फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए उसके जो एंड नोड के जो लेटेस्ट टाइम है, लेटेस्ट टाइम मतलब सेकेंड डिजिट इज द लेटेस्ट, तो दैट इज 15 इन दिस केस। तो 15 में से उसके जो स्टार्ट नोड है, स्टार्ट नोड की अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट मतलब फर्स्ट डिजिट, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है, सो 15 माइनस 4, ठीक है, 15 माइनस 4 दैट इक्वल टू 11। From that, you have to subtract the duration of that activity. That is 6 in this case. So 11 minus 6. So that is coming to be 5. So activity F का जो total float है, that is equal to 5 time units, 5 days, right? तो ये activity F के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के पास 5 days का टाइम है, वो उसको अगर 5 days तक डिले भी करता है तो भी आपका प्रोजेक्ट हैम्पर नहीं होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हैम्पर नहीं होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टोटल फ्लोट। ठीक है, अब मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ और आप उसका टोटल फ्लोट हमको बताइएगा। ठीक है, लेट मी गिव यू द एक्टिविटी ई, ऑल ऑफ यू, आइदर यू आंसर और नॉट, बट ऑल ऑफ यू आई रिक्वेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एक्टिविटी ई लीजिए। ठीक है, यू पिक अप एक्टिविटी ई। Now I want to know what is the total float of activity E. ठीक है, आप सोच लीजिए, फिर अगर आपको आंसर पता है तो बताइए। ओके, एक्टिविटी का मैं देख लेता हूँ। दिस इज द एंड नोड का हो गया आपका 8 और स्टार्ट नोड का हो गया 4। So 8 minus 4 is 4 minus duration of the activity, that is 1. 3 is the right answer. ठीक है, तो एक्टिविटी ई का टोटल फ्लोट हो गया 3 टाइम यूनिट्स। ओके, और एक कर लेते हैं फिर। ओके, लेट अस डू फॉर एक्टिविटी और बाकी सब तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे हम आपको बताएंगे। सी, यहाँ पे जो कुछ नोड्स है, जिस नोड में हम अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम जो लिखे हैं, आप देख रहे हो कुछ जगह में दोनों इक्वल है। ठीक है ना, जैसे 0 0 तो रहता है इक्वल और लास्ट भी 15 15। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन नोड 4 इट इज 8 8, इन नोड 2 इट इज 3 3। तो जहाँ पे इक्वल होता है, जैसे मैं प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जहाँ पे इक्वल होता है दैट विल बी ए पार्ट ऑफ योर क्रिटिकल पाथ, राइट। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पे इक्वल है दोनों अर्ली और लेटेस्ट टाइम, उनको कनेक्ट किया हुआ एक्टिविटी हमेशा क्रिटिकल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉन क्रिटिकल भी हो सकता है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल यहीं पे है। यू पिकअप एक्टिविटी सी। ठीक है, एक्टिविटी सी ऐसा एक एक्टिविटी है जिसके स्टार्ट नोड और एंड नोड दोनों में भी आपका अर्ली और फिनिश टाइम सेम है। ठीक है, 8 8 है और यहाँ 0 0 है, फिर भी सी एक क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है। So it will be risky to assume that all the activities which are connecting the nodes having equal early and start time are critical activity. It may not be true, but other way it is correct. Other way means
all the critical activities must have ऐसे कोई critical activity आप नहीं देखोगे जिसके से end और start node में जो values है वो unequal है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? You got my point? Yes, please be careful about this statement because ये क्रूशियल चीज है आपके नेटवर्क कंस्ट्रक्शन एनालिसिस में कि कोई जरूरी नहीं कि जहां जहां आपका ईयरली और लेटेस्ट टाइम इक्वल हो गया उनको जो कनेक्ट करता हुआ एक्टिविटी वो हमेशा क्रिटिकल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर कोई एक्टिविटी क्रिटिकल है तो उसके एंड और स्टार्ट नोड में इक्वल होना जरूरी है और होगा भी। तो ये चीज यहीं पे इसी एग्जांपल पे प्रूव हो रहा है। आप एक्टिविटी सी देखिए, एक्टिविटी सी हैज गॉट ए फ्लोट, इट इज नॉट क्रिटिकल क्योंकि एक्टिविटी सी का कितना फ्लोट है, टोटल फ्लोट एनीवन? 2 है। तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है। जिस एक्टिविटी का फ्लोट 0 है, आप देखिए एक्टिविटी ए, डी एंड जी, इनका टोटल फ्लोट कितना है? 0 है। 0 means there is no float, there is no freedom, there is no time for relaxation. That is the meaning of total float. ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो रहा है जो मैंने कहा कि क्रिटिकल एक्टिविटी के दोनों एंड में जो नोड्स है उनका ईयरली और लेटेस्ट टाइम हमेशा इक्वल रहेगा। और ये भी प्रूफ हो रहा है कि जब कोई एक्टिविटी दो ऐसे नोड को ज्वाइन कर रहा है जिनका ईयरली और लेटेस्ट टाइम इक्वल है, कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा क्रिटिकल भी होगा, ठीक है? सो दिस इज सर्टेन थिंग्स वी फाउंड और अंडरस्टूड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं उनको अभी, आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। एनी डाउट्स? Okay, so I think to proceed now. I have another problem, but maybe I will not be able to complete it, but I'll just show you. Okay, so these are the total float calculations we have already discussed. आपको याद होगा activity F का हम 5 निकाले थे and it is coming up to 5. Okay, there is another thing which is called slack, right? Slack is associated with the events. जैसे float को हम associate करते हैं activity के साथ, there is another term which represents the kind of freedom or kind of relaxation buffer time, that is called slack. slack को हम event के साथ जोड़ के देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो नोड्स है, जिस नोड में हम वो ईयरली और लेटेस्ट टाइम कैलकुलेट किए हैं, तो वैसे नोड्स का हम स्लैक्स भी निकाल सकते हैं। तो जिस नोड में दोनों इक्वल है तो वो 0 हो गया, जहाँ पे अनइक्वल है वो नॉन जीरो हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड स्लैक। So remember, slack is related with event and float is related with activity. Okay. Now let me quickly discuss another problem, maybe within 5-10 minutes. So this is the second problem. ये भी problem मैंने आपको दिया था कि you try to draw the network of this. तो अगर आप network बना सकते हैं, then you can apply the same things like the previous case. To do the forward-backward computation, how to identify the critical paths, how to identify the floats for each of the activities and all that. So the prerequisite है कि आपको नेटवर्क का डायग्राम ठीक से ड्रॉ करना होगा। और इस एग्जांपल में आपको याद होगा एक डमी एक्टिविटी मोस्ट है, ठीक है? एक डमी एक्टिविटी मोस्ट है, तो ये इसका नेटवर्क था। Now let us do its calculation. तो नेक्स्ट स्लाइड में इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो रिलेटेड विद दिस प्रॉब्लम है, जो आप कैलकुलेशन के बाद कर सकते हो। यूज द एक्टिविटी नेटवर्क, फाइंड क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड द शॉर्टेस्ट टाइम इन व्हिच द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। वो तो जब आप फॉरवर्ड पास कंप्लीट कर लोगे देन आपको मिल जाएगा कि शॉर्टेस्ट टाइम क्या है। जब आपका लास्ट नोड का डिजिट मिल जाएगा और दैट इज द शॉर्टेस्ट टाइम, दैट इज द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। कैलकुलेट टोटल फ्लोट ऑन ईच एक्टिविटी, ये भी आज हम डिस्कशन किए हैं। कोई भी एक्टिविटी का फ्लोट हम कैसे निकालेंगे, तो एक बार आपके सारे ब्लॉक्स फिलअप हो जाएगी तो आप वो भी कर सकते हो। देयर आर सम सिचुएशनल प्रॉब्लम्स व्हिच यू कैन डिस्कस। व्हाट इफेक्ट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग डिलेज हैव ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द होल प्रोजेक्ट एंड द
क्रिटिकल एक्टिविटी। तो जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपके सारे फिगर्स एंड दैट, इसके बाद एक एक सिचुएशन लेके आप करोगे। मान लो सी इज डिलेड बाय 2 days, तो आप सी का जो ड्यूरेशन है उसको और 2 days बढ़ा के फिर से इटरेट करोगे, देखोगे क्या हो रहा है, क्या क्या फर्क पड़ रहा है, ड्यूरेशन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। सो वन बाय वन यू हैव टू डू। एफ इज डिलेड बाय 3 days, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है। मान लो कोई प्रोजेक्ट का कोई एक्टिविटीज फॉर सर्टेन टाइम डिले होता है, तो प्रैक्टिकली भी आप इसको इटरेट करके चेक कर सकते हो कि ओके ये आई मीन सिमुलेट कर सकते हो कि जैसे सी डिले हो गया 2 दिन, तो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट। एफ डिले हो गया 3 days, व्हाट विल बी इफेक्ट्स। तो आप देखोगे हो सकता है कुछ डिले होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ डिले होने से प्रोजेक्ट कंप्लीशन में फर्क पड़ रहा है, whatever effect it will have, that you can simulate. Let me quickly show you. Okay, so now you can understand what is the meaning of all these blocks and figures and calculations. Right? It's pretty clear to you. तो आप फर्स्ट नोड में फर्स्ट फिगर तो हमेशा 0 से स्टार्ट करते हो, फिर ये ब्लॉक सब भर गया, आप लोग चेक कर सकते हो कि ये सब ब्लॉक्स कैसे भरा। मीन्स यू ट्राई टू थिंक ऑफ योरसेल्फ। जहाँ पे you have more than one arrow, you can see the maximum has been taken, right? और यहाँ पे डमी का भी ट्रीटमेंट आप देख सकते हो। जहाँ पे डमी है, ठीक है, जहाँ पे डमी है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ डमी एक्टिविटी, 0, ठीक है। तो मान लो उसका कोई भी एक एक्टिविटी अज्यूम कीजिए, लेकिन इसका ड्यूरेशन 0 है। तो जैसे नोड 3 में आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 2 एरो मीट कर रहा है, एक एक्टिविटी बी, द अदर इज द डमी वन। तो एक्टिविटी बी में क्या हो रहा है, 0 + 3 दैट इज 3, और डमी से जब आ रहे हो क्या आ रहा है, 2 + 0 2, एंड इन फॉरवर्ड पास यू हैव टू टेक द मैक्सिमम वैल्यू। तो नोड के 3 के फर्स्ट डिजिट आप 3 लिखे हो बिकॉज 3 इज द मैक्सिमम, ठीक है। तो डमी केस को ऐसे ही ट्रीट करना होगा, राइट। तो यू विल प्रोसीड एंड यू विल रीच द एंड नोड। यहाँ पे एंड नोड आपका 17 टाइम यूनिट्स लग रहा है, डेज लिखा है, राइट, डेज 17 डेज। तो जैसे वो 17 डेज हो गया, आप सेकेंड जो फिगर है उसका जो लेटेस्ट फिनिश टाइम, उसको भी यू हैव टू मेक इट 17, वो दोनों इक्वल करना है। 17 करके आप बैकवर्ड पास कैलकुलेशन करोगे, वो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। देन यू विल रीच द फर्स्ट नोड and that automatically come as 0, that is completed. Now let us see what either one or more than one critical paths must be there, right? Minimum one. Now how to identify the critical path? I told you the easiest way is to find all the alternative paths, okay? All the alternative paths, but you can use this as a secondary rule also. Critical path वही path है जो सब नोड्स को कनेक्ट कर रहा है जिसमें स्लैक 0 है। स्लैक मीन्स बोथ द वैल्यूज आर सेम एंड स्लैक इज 0। लेकिन इसमें मिस्टेक भी हो जाता है, जैसे लास्ट एग्जांपल में आप देखें कि कुछ एक्टिविटी ऐसे भी हो सकता है जो स्लैक 0 को कनेक्ट कर रहा है बट क्रिटिकल नहीं है। सो आई विल गिव यू द फुल प्रूफ मेथड दैट यू फाइंड व्हाट आर द पॉसिबल पाथ्स कनेक्टिंग द फर्स्ट एंड लास्ट नोड एंड जस्ट मेंशन द टाइम्स, टोटल टाइम्स फॉर देम, right, and identify the path which is giving you the maximum. So that is the foolproof way. वो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर more than one path ऐसे मिल रहा है जो कि दे रहा है आपका maximum time, जैसे कि 17 in this case, so you can identify there are multiple. तो यहाँ पे alternative paths क्या क्या है देख के बताइए आप थोड़ा सा। What are the alternative paths connecting first and the last node? फोर हो रहा है, ठीक है। देखिए ए डी जी इज 1, डी जी इज 1, बी डी जी 2, देन सी ई जी 3, देन सी एफ। हाँ ठीक है, फोर अल्टरनेटिव पाथ्स। और ये 4 पाथ का अगर टोटल टाइम ऐड करके लिखोगे तो आपको ऑब्वियसली ये वाला मैक्सिमम मिलेगा और 17 ही मिलेगा, दैट इज सी ई जी। बाकी सब उससे कम ही मिलेगा, 17 से कम ही मिलेगा। द लॉन्गेस्ट पाथ इज द क्रिटिकल। तो इसको आप रेड कर दीजिए, या अगर आपके पास रेड कलर तो नहीं होगा तो इसको आप यूजुअली डबल लाइन किया जाता है ना, बहुत पास 2 पैरेलल लाइन बना सकते हो क्रिटिकल पाथ के लिए, या थोड़ा बोल्ड कर सकते हो, ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव एनी कलर्स, ठीक है। somehow you have to identify that this is the critical path.
तो क्रिटिकल पाथ मिल गया, क्रिटिकल एक्टिविटीज हो गया आपके, CEG टोटल कंप्लीशन टाइम हो गया 17 डेज। फ्लोट्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल फ्लोट्स यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट करके, जैसे ऑल द एक्टिविटीज का देखिए आप A to G तक सबका टोटल फ्लोट्स यहाँ कैलकुलेट करके लिखा है। और जिस चीज एक्टिविटी का टोटल फ्लोट 0 लिखा है, लाइक C, E एंड G, वही आप रेड कलर की हो बिकॉज दे आर क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज का टोटल फ्लोट 0 होता ही है। सो बट फॉर रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज यू कैन फाइंड। अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग देखिए, एक्टिविटी F जो है, सॉरी हाँ F है, एक्टिविटी F है, इसका टोटल फ्लोट 10 डेज है। कैन यू इमेजिन, मींस इट इज हैविंग a 10 days of freedom, I mean relaxation for the project manager without affecting the project completion time. So it's a great thing. So जिसका जो भी फ्लोट है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी चेक समवन दैट whether you are able to find it or not. Suppose activity D, ठीक है, activity D, can you find the total float? If I can pick someone from this class, all of you are listening, then okay. Satyam Misra, are you there? Satyam Misra. Satyam Misra, are you active? Satyam Misra. He is not Satyam. Okay, this is the best way to remain silent for some time. No problem. I'll just pick some other. Mridul De. Are you following, Mridul? Yes, sir. I'm asking for activity D. Can you find the total float and tell me how you have found it? Activity D. I think you are not understood. Can you repeat it once? You mean to say I should explain it? Yes, sir. Okay, good. So see, for any activity to find the total float, हम क्या कर रहे हैं कि उसके जो एंड नोड है जहाँ पे वो खत्म हो रहा है, मर्ज हो रहा है, उस नोड के जो दोनों टाइम और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस स्टार्ट नोड के जो दोनों टाइम, उसको यूज करना होगा हमको टोटल फ्लोट के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी के टोटल फ्लोट के लिए उसके जो एंड नोड के जो सेकेंड फिगर है, दैट इज द लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, लेटेस्ट सेकेंड फिगर। तो इस केस में कितना है, वो 13 है, या तो दोनों 13 है, ठीक है ना। तो सेकेंड फिगर 13 है, 13 से हमको माइनस करना होगा उसके जो स्टार्ट नोड के फर्स्ट फिगर, दैट इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द फर्स्ट नोड, द स्टार्टिंग नोड। इस केस में कितना है वो, मृदुल? Yes, sir. कितना है पूछ रहा हूँ, अर्ली स्टार्ट टाइम कितना है इसके स्टार्ट नोड के? 3, फर्स्ट डिजिट 3। मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो कि टोटल फ्लोट के लिए उसके एंड के जो सेकेंड फिगर से स्टार्टिंग का फर्स्ट फिगर को माइनस करना होगा, राइट? इज इट क्लियर? ठीक है। सो 13 minus 3, that is 10 minus duration of the activity, that is 6. So 10 minus 6 is 4. So यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो कि D का टोटल फ्लोट 4 है, राइट? ठीक है, तो I have to stop it here. I can continue, but I think it will affect your other classes. आपका आगे और भी क्लास है ना?
Okay. Okay, so I'll stop here. But in the next class, maybe I'll continue with this problem because there are few parts are left, like what is happening when these are delayed and all that. So we'll begin from this. Another 1 or 2 classes will devote for this network calculation, and calculation of other types of floats are also there, right? ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी को पूछना है? Okay then. Okay. So I'm ending this meeting now.